ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 89 of the Ayodhya Kandam, which has 23 verses. Having encamped his followers, including the army that were ferried across the Ganga by the fishermen, and joined by Guha, Bharata sets out with sage Vashishta and others to the hermitage sage Bharatwaja with the intent to see the latter. आज हम 89वें सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 23 श्लोक है। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भारद्वाज के आश्रम पर जाना। वियुष्य रात्रिं तु तत्रैव गङ्गाकूले स राघवः काल्यमुत्थाय शत्रुघ्नम् इदं वचनम् अब्रवीत्। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातः काल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। Having spent the night at that very spot where Sri Rama had rested not long ago on the bank of the Ganga, and rising at daybreak, the said Bharata for his part spoke to Shatrughna as follows. शत्रुघ्न उत्तिष्ठ किं शेषे निषादाधिपतिं गुहं शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम्। शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुह के शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। How do you continue to sleep till now? Get up, O Shatrughna, and fetch Guha, the ruler of the Nishads, quickly, so that he will convey the army to the other bank. May all be well with you. जागर्मि नाहं स्वपिमि तथैवार्यं विचिन्तयन् इति एवम् अब्रवीत् भ्राता शत्रुघ्नो विप्रचोदितः। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। Contemplating on Sri Rama, my eldest brother, even as you are, I am keeping awake, not sleeping. In these very words did Shatrughna, Bharata's younger brother, reply when admonished as above by Bharata. इति संवदत् उरेव मन्योन्यं नरसिंहयोः आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनमब्रवीत्। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुहा उपयुक्त बेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला। Arriving at an opportune moment while Bharata and Shatrughna, the two lion among men, were conversing with each other as aforesaid, Guha submitted to Bharata with folded hands as follows. कञ्चित् सुखं नदीतीरे अवात्सीः काकुत्स्थ शर्वरीं कच्चिच्च सहसैन्यस्य तव नित्यम् अनामयम्। कुत्स्थ भूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वदा निरोग है ना? I hope you spent the night comfortably on the riverbank, Ocean of Kokusta, and I hope you are entirely free from distemper along with your army. गुहस्य तत्तु वचनं श्रुत्वा स्नेहात् उदीतिरितं रामस्य अनुवशो वाक्यं भरतो अपीडम् अब्रवीत्। गुहा के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा। Hearing the aforesaid question asked with affection by Guha, Bharata too, for his part, who had subordinated his will to Sri Rama, made the following reply. सुखा नः शर्वरी धीमन् पूजिताश्चापि ते वयं गंगां तु नौभिर्बहिविभिः दासाः
सन्तारयन्तु नः। बुद्धिमान निषाद राज, हम सब लोग की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दे। It was a happy night for us, O sagacious friend, and we have been properly entertained by you. Let your fishermen now duly ferry us across the Ganga on a number of boats. ततो गुहः संत्वरितः श्रुत्वा भरतशासनं प्रीतिर्प्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनम् अब्रवीत्। भरत का ये आदेश सुनकर गुहा तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला। Hearing Bharata's command and returning to the city with great expedition, Guha forthwith spoke as follows to his said kinsmen. उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रम् अस्तु हि वः सदा नावः सम् उपकर्षध्वं तारयिष्यामि वाहिनीम्। उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। Wake up and rise. May prosperity ever actually attend you. Duly haul the boats to the bank. I shall have the army ferried across the Ganga. ते ततोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् पञ्चनावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः। गुहा के इस प्रकार कहने पर अपने राज्य की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। Springing up on their feet when addressed thus by Guha, the boatmen hurriedly brought together from all sides in obedience to their chief's command 500 boats. अन्याः स्वस्तिक विज्ञेया महाघण्टाधरावराः शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वास्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी जो स्वास्तिक के चिन्ह से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्ह से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से इन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। And they also brought other excellent boats too, known by the name of Swastika, because of their bearing the mark of swastika, which looked charming, were distinguished by flags and equipped with rows. Nay, they were strongly built and had large bells tied to their sails. ततः स्वस्तिक विज्ञेयां पाण्डु कम्बल संवृतां सनन्दी घोषां कल्याणीं गुहो नावम उपाहरत। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुहा स्वयं लेकर आया जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा स्वास्तिक नाम वाली नाव पर मंगलिक शब्द हो रहा था। Then Guha himself bought a lovely boat, also known by the name of Swastika, the floor of which was covered with white rugs fit for kings and which was distinguished by the sound of festal music. ताम आरुरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महाबलः कौसल्या च सुमित्रा च याश्च अन्या राजयोषितः। Bharata and Shatrughna, who was possessed of great might, as well as Kaushalya, Sumitra, and whatever other royal ladies there were, ascended it. पुरोहितश्च तत्पूर्वं गुरवो ब्राह्मणाश्च ये अनन्तरं राजदाराः तथैव शकटापनाः। Sage Vashishta, the family priest, and whatever elderly brahmanas were present there took their seats even before Bharata and the royal ladies, and immediately after these followed the other ladies of the royal family, as well as the bullock carts and the provisions which were loaded on other boats. उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी वे सब सवार हुई। तदंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी।
गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गई। आवासमादीपयतां तीर्थं च अपि अवगाहतां भाण्डानि च अदधानानां घोषस्तु दिवम् अस्पृशत्। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रता पूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। The din of men setting fire to the huts erected for them, as well as resorting to the descent in order to be able to ascend the boats and collecting the utensils in order to load them, actually rose to the skies. पटाकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दशैर् अधिष्ठिताः वहन्त्यो जनमारूढां तदा संपेतु राशुगाः। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वह सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्य को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। Ferrying the men seated in them, those swift-going boats which were adorned with flags and controlled by the fishermen, then sailed automatically as it were. नारीणाम् अभिपूर्णास्तु काश्चित् काश्चित्तु वाजिनां काश्चित् तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं महाधनम्। इतनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। Some boats were full of women, while others were loaded with horses, while some more of them ferried costly chariots and animals of drog. तास्तु गत्वा परं तीरम् आरोप्य च तं जनं निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दशबन्धुभिः। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। Having reached the opposite bank and enabled those men, etc., to land, the boats for their part returned and were piled as so many toy boats on water by the rowers, who were all kinsmen of Guha. स वैजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वताः। विजंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। Swimming across the Ganga as urged by their mahouts, the elephants with flags on their back actually shone like winged mountains. नावश्चारुरुः त्वन्ये प्लवैः तेरुस्तथा परे अन्ये कुंभघटैः तेरुरन्ये तेरुश्च बाहुभिः। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिकोने से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। Nay, other men took their seats on the boats, while others crossed the river by means of rafts. Still others swam across with the help of big and small earthen vessels, and the rest swam with their arms alone. सा पुण्या ध्वजिनी गंगां दाशैः संतारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनम् उत्तमम्। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयागन वन की ओर प्रस्थित हो गए। Ferried across the Ganga by the fishermen themselves, that holy army which was hallowed through contact with holy men like Prince Bharata and sage Vashishta, as well as through a bath in the Ganga and other sacred streams, and was proceeding on the holy mission of bringing Sri Rama back to Ayodhya, marched towards the excellent forest encircling Prayaga
during the hour known by the name of Maitra, because of its being sacred to Maitra, the sun god. The translator has added a footnote explaining Muhurta, loosely translated as an hour, really consists of 48 minutes. There are 15 such Muhurtas in a day. They are named in order by Brahaspati as Rudra, Sarpa, Maitra, Paitra, Vasva, Apya, Vaishva, Brahma, Praja, Isha, Aindra, Aindragna, Nairta, and Varunyamana and Bhagi. Bharadwaj is referred to as the family priest of gods because he was sprung from the lines of sage Brahaspati, the preceptor of the gods. कुछ टीकाकारों के ने ये किया है, 2-2 घड़ी दंड का एक मुहूर्त होता है, जिनमें कुल 15 मुहूर्त बीतते हैं। इनमें से तीसरे मुहूर्त का मैत्र कहते हैं। बृहस्पति ने 15 मुहूर्तों के नाम इस प्रकार गिनाए हैं: रौद्र, सार्प, मैत्र, पैत्र, वास्व, आप्य, वैश्व, ब्रह्मा, प्राज, ईशा, इंद्र, इंदाग्रा, नेतृत्व, वरुणमयन तथा भागी जैसे कि वचन है। आश्वासयित्वा च चमूं महात्मा निवेशयित्वा च यतोपजोषं दृष्टुं भरद्वाज ऋषिप्रवर्यं ऋत्विक् सदस्यै भरतः प्रतस्ते। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुख पूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋतिवजों तथा राज्यसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भारद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। Nay, cheering up the troops and comfortably encamping them in the forest encircling Prayag, the high-souled Bharata, along with the priests and the king's counselors, set out to meet Bharadwaja, the foremost of rishis, the seer of Vedic mantras. स ब्राह्मणस्य आश्रमम् अभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य ददर्श रम्य उटज वृक्षदेशं महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम्। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्रशिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षवालियों से सुशोभित था। Reaching the hermitage of the high-souled Bharadwaja, the family priest of gods, who was not only a knower of Brahma, but also the foremost of Vedic scholars, Bharata saw the extensive and delightful grove surrounding the hermitage, consisting of cluster of trees interspersed with lovely huts of leafy twigs. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 89तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 89 in the Ayodhya Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulям Ramanama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद।